Assalamu alaikum. Welcome to our new course, new lesson based on translation course from Urdu English, English to Urdu. So you can note my address bukharihAmid786 @gmail.com. Today our lesson is based on how you can translate and have exact preposition, harf jar. And before we have done on and at. Now today, let's see how to use in and the comparative or comparison between on and at. अगर आपके पास अब जुमला है, for example, आपके जुमले में season है. For example, आपके पास 4 season है. You have 4 different seasons, like you have summer, like you have winter, like you have autumn and spring. अगर आपके पास जुमला है कि मैं मौसमी खजा में आपके घर आऊंगा, जुमले में है मौसमी खजा, तो आप इसको तर्जुमे में लाना, आपको इसको तर्जुमे में लाना है तो कैसे तर्जुमा करेंगे हम? I will come to your home in autumn. In autumn. So you have to use in with seasons. जब आपके पास तर्जुमे में हो मौसम, for example, आपके पास जो मौसमी सरमा है, आपके पास मौसमी गर्मा है, आपके पास मौसमी बहार है, आपके पास मौसमी खजा है, तो आप इनको तर्जुमे में लाना है, इनको तो आप हमेशा इन का इस्तेमाल करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीजन, तो आपको खुद समझ आएगा. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन. मैं आपके घर मौसमी सरमा में आऊंगा, मैं आपके घर सर्दियों में आऊंगा. आई विल कम मौसमी सरमा में आऊंगा. आई विल कम टू योर होम इन विंटर. सो आप तर्जुमे में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ऑन विंटर नहीं करेंगे, आप एट विंटर नहीं करेंगे, आप इन विंटर का इस्तेमाल करेंगे. सो एग्जैक्टली व्हेन यू हैव लाइक आई विल राइट हियर आई विल कम और आई एम कमिंग टू योर होम इन विंटर. तो तर्जुमा में करेंगे हम मैं आपके घर मौसमी, या मैं आपके घर सर्दियों में मैं आ रहा हूं. हाँ, अब देखो, अब आपके पास जो आपके पास कोई जुमला है आपके पैराग्राफ में, उसमें मेंशन आपके पास महीनों का मेंशन है, लाइक मंथ्स. You have months, for example, you have January, you have February, you have March, April. That means you have months. Whenever there is mention of month, you always use the preposition. तब आप preposition का इस्तेमाल in करेंगे, तब आप preposition का इस्तेमाल in करेंगे. जैसे आपके पास जुमला है मैं जनवरी को दुबई जा रहा हूँ, मैं जनवरी को दुबई जा रहा हूँ. तो जनवरी को दुबई जा रहा हूँ, तो इसमें आपके पास मंथ है, तो मंथ के साथ आप जब तर्जुमा करेंगे तो ऑन जनवरी नहीं करेंगे, आप एट जनवरी नहीं करेंगे. तो आप तर्जुमे में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे मैं जनवरी में दुबई जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू दुबई इन जनवरी. तो आप तर्जुमे में इनका इस्तेमाल करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिखूँ, आई विल राइट हियर मंथ्स. तो यहाँ पे मैं इन लिखूंगा. अब देखो, अब आपके पास सफर करना है, आपको सफर करना है. सफर के दौरान आप किसी और की गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी बहन की गाड़ी है, आपके भाई की गाड़ी है,
آپ کی کسی دوست کی گاڑی ہے، دوست کی گاڑی ہے آپ کے پاس، کسی دوست کے پاس کار ہے، تو آپ اس کا یوز کرتے ہیں، تو اس میں آپ سفر کرتے ہیں. جب بھی آپ سفر کریں گے تو اس قسم کا جملہ جب آپ کے ترجمے میں ہو، آپ کے اس پیراگراف میں ہو، جب بھی آپ سفر کریں گے کسی اور کی گاڑی میں، تب ہمیشہ آپ پریپوزیشن حرف جار کا جو استعمال ہے وہ ان کریں گے. جیسے میں اپنی بہن کی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، تو آپ ترجمہ کریں گے I travel in my sister's car. تو یہاں پہ آپ بائی کا استعمال ترجمہ میں نہیں کریں گے. That means I travel by my sister's car. No, you will write here I travel in my sister's car. So I will write here travel. تو I will write here in. لیکن اب ایسا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو تب بھی آپ استعمال کریں گے in I travel in my car. اگر آپ اس کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو آپ ترجمہ میں کریں گے I travel in his car, I travel in her car. تو آپ ان کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں I travel in their car, I travel in their car. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر جملہ ہے آپ کے پیسیج میں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں، میں سفر کر رہا ہوں. یہاں پہ اب جملہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میں اس کی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میں ان کی گاڑیوں میں سفر کر رہا ہوں. جملہ صرف یہ ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں. جب ایسا جملہ ہے تو آپ ان کا استعمال، حرف جار ان کا استعمال نہیں کریں گے، پریپوزیشن کا استعمال نہیں کریں گے جملے میں. تو اس کو ترجمہ کیسے کریں گے؟ تب میں سفر کر رہا ہوں. جیسے میں سفر کر رہا ہوں، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے I travel. لیکن اگر آپ کے پاس اب گاڑی ہے، میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، میں ایروپلین میں سفر کر رہا ہوں. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی گاڑی میں اس کی ٹرین میں اس کے ایروپلین میں، ایسا کچھ نہیں. میں نے کہا میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں. تو تب آپ بائی کا استعمال کریں گے سفر کے دوران. جو حرف جار ہے جو پریپوزیشن ہے، اب بائی کا استعمال کریں گے نہ کہ ان. تو میں کہوں گا میں یہاں پہ میں ایڈ کروں گا میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں. تو آپ کریں گے ترجمہ، اس کا ترجمہ کریں گے I travel by bus. I travel by bus. میں کار میں سفر کر رہا ہوں. I travel by car. میں ایروپلین میں سفر کر رہا ہوں. I travel by aeroplane. اب یہاں پہ دیکھو میں اس کے ایروپلین میں سفر کر رہا ہوں. I travel in his aeroplane. میں انڈیگو کے ایروپلین میں سفر کر رہا ہوں. I travel in Indigo's aeroplane or in Indigo's travel agency. It's like this. تب آپ نے مینشن نہیں کیا تو میں سفر کر رہا ہوں. اب ایسا ہے، اب دیکھو ایسا، اب تھوڑا کمپیریٹو. اب آپ کے پیسیج میں اگر جملہ ہے کہ میں گھوڑے پہ سفر کر رہا ہوں، اب دیکھو نہ یہاں پہ میں اپنی گاڑی میں، نہ ان کی گاڑی میں، نہ یہاں پہ جملہ ہے میں گاڑی میں سفر کر، اب جملہ ہے میں گھوڑے پہ سفر کر رہا ہوں. اب یہاں پہ جب آپ ترجمہ کریں گے انگریزی میں تو نہ یہاں ان کا استعمال ہوگا، نہ یہاں بائی کا استعمال ہوگا. اب اگر یہاں پہ استعمال ہوگا تو وہ آن کا استعمال ہوگا جب گھوڑے کا مینشن ہو. جیسے میں گھوڑے پہ سفر کر رہا ہوں. I travel on horse. I travel on horse. یہاں پہ ان کا استعمال اب نہیں ہوگا. تو جب آپ کے پیراگراف میں اس قسم کا جملہ ہو کہ میں سائیکل یا بائسیکل پہ سفر کر رہا ہوں تو آپ ترجمہ کریں گے I travel on bicycle. I travel on cycle. تو اب ایک اور جملہ ہے، اگر آپ کے ترجمہ میں ترجمہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کا جملہ جو ہے میں پیروں پہ سفر کر رہا ہوں، میں پیروں پہ سفر کر رہا ہوں، یا میں پیروں پہ چل رہا ہوں، مطلب ایسا کچھ ہو. تو پیر تو ہم استعمال زیادہ نہیں کرتے ہیں اردو میں، تو ہم کہیں گے میں پیدل سفر کر رہا ہوں. تو یہاں پہ
इन का इस्तेमाल नहीं होगा, एट का इस्तेमाल नहीं होगा, बाय का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे भी आई ट्रैवल ऑन फुट, आई ट्रैवल ऑन फुट, आई ट्रैवल ऑन फुट। तो आज का जो ट्रांसलेशन के लिए मौजूद था, हमने उन्वान चुना था, तो वो तो इन का था। तो अगर आप कंट्री का इस्तेमाल है, तो मैं श्रीनगर में रहता हूँ, तो आप जब तर्जुमा करेंगे तो हर्फ जार का इस्तेमाल इन करेंगे किसी भी कंट्री का। आई लिव इन श्रीनगर, आई लिव इन कैलिफोर्निया, आई लिव इन अफगानिस्तान, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पाकिस्तान। सो जब आप कंट्रीज का मेंशन करेंगे, सिटीज का मेंशन करेंगे, तो तर्जुमा में हर्फ जार का इस्तेमाल इन होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले दिन कहा था कि जब आप फुल डेट का इस्तेमाल करेंगे, लाइक जनवरी 26, 1994 और 2000, तो आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं फुल डेट से। लेकिन अगर आपके पास जुमला है जिसमें आपका सिर्फ एक ही डेट मेंशन है, फॉर एग्जांपल आपका सिर्फ डेट ईयर मेंशन है, ईयर 2000, मेरा भाई 2000 में पास हो गया, या मेरे भाई ने ग्रेजुएशन 2000 में करी, या उसने 2000 में ग्रेजुएशन कर ली मेरे भाई ने, तो यहाँ पे ईयर का जो मेंशन है, तो आप तर्जुमे में जो हर्फ जार का इस्तेमाल करेंगे वो इन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप याद रखिए, जब डेट हो ईयर का, तर्जुमा में आप हर्फ जार इन करेंगे इस्तेमाल। जब ट्रैवल हो, तर्जुमा में आप इन करेंगे इस्तेमाल, जब किसी की गाड़ी में ट्रैवल करें। जब आपके पास सीजन हो, तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे तर्जुमा में। जब आपके पास महीने हो, तब इन का इस्तेमाल करेंगे। अब और एक बात, अगर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, जैसे 2 ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या 3, तो इसमें है सुबह और शाम, सुबह और शाम। आपके जुमला, आपके पैसेज में अगर जुमला है कि मैं मॉर्निंग को, या मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसमें तर्जुमा करना है, तो आप इन का इस्तेमाल करेंगे हर्फ जार में। सो यू से दैट, या ऐसे कहेंगे कि आई वॉज बॉर्न इन मॉर्निंग, आई केम इन मॉर्निंग, मैं सुबह को आया, मैं सुबह को आया, आई केम इन मॉर्निंग। तो आप आई केम ऑन मॉर्निंग नहीं करेंगे, तो आपके पास इवनिंग है, शी वॉज बॉर्न इन इवनिंग, वो रात को, शाम को पैदा हुई है। अब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, ये तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम था। जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट होगा कि बिल्कुल छोटा सा, मतलब नुक्ता है आपके पास। जब जो घड़ी है, फॉर एग्जांपल 12 बजे, आपके पास 11 बजे, आपके पास 12 बजे का जो हम नेम इस्तेमाल करते हैं, नाम इस्तेमाल करते हैं, मिडनाइट करते हैं इस्तेमाल। तो नून है आपके पास, नून का 12 बजे, सुबह के 12 बजे हम नून का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास ये 2 है, तो आप इसमें आप जो तर्जुमा करेंगे आप हर्फ जार का, वो एट होगा। सो आप इसका तर्जुमा करेंगे, यू विल से आई विल कम एट मिडनाइट, शी वाज बोर्न एट नून। तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे हर्फ जार जब आपके पास ऐसा कोई जुमला हो। तो टुडे यू हैड अ वेरी गुड टॉपिक अबाउट in and the comparison between in, by and on, how to translate those sentences, if you do have, how to translate them into English, and if you have the same in English, and you can translate them into Urdu. So please, you just learn things and you just try to translate things and then send it to me, and we'll just see your progress. And till then, goodbye. See you in our next lecture. So thank you.